Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. In these coming sessions, हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आगे मूव करते रहेंगे और हर टॉपिक के लाइक आज की क्लास का हमारे 3 टॉपिक्स हैं. The first topic is user defined data type. I shared the timetable with you people. The next topic will be real numbers, and the last topic is file handling, file organization, file access policies. So we are going to solve multiple past paper questions of these 3 topics. और मैं आप लोग को फर्दर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आप लोग को चीजें रिवाइज भी करवाता रहूंगा, आप लोग को मेथड भी बताता रहूंगा, सो दैट यही हम लोग प्रैक्टिस ऑफ करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टिल द लास्ट चैप्टर, ताकि आप लोग को ओवरऑल बच्चों हर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए. अच्छा, आई हैव अभी तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर आई कैन नॉट फाइंड, मतलब कोई बहुत ज्यादा सिलेबस के अंदर कोई नई चीज नहीं थी. सो जर्नली मैंने 80% या 85% क्वेश्चंस पास पेपर के ही पिक करें फॉर द प्रैक्टिस सेशन. बट कुछ टॉपिक्स जो नए टॉपिक्स हैं उनके मैं अपने क्वेश्चंस भी आप लोग को बना के प्रैक्टिस करवाऊंगा, सो दैट आप लोग हर डोमेन के अंदर रेडी होने चाहिए फॉर पेपर 3, बिकॉज वी कैन नॉट लीव एनी लूप होल इन पेपर 3. हमें बिल्कुल 110% एफर्ट्स पुट करने फॉर पेपर 3 बेटा, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी आर गिवन अ रिकॉर्ड डाटा टाइप. A record data type is a data type that consists of one or more data types. So type, book, and one stuff is ISBN, author, title, supplier, and supplier is actually an NM, enumerated एक आपके पास डिफाइन किया गया है और यहाँ पे हमारे पास n टाइप कर दिया गया. तो नेम द डाटा टाइप ऑफ बुक. सो बुक की डाटा टाइप क्या है हमारे पास? दिस इज अ रिकॉर्ड. नेम non-composite data type used in supplier declaration. तो बच्चों this supplier declaration is actually enumerated. NM कहते हैं इसे हम लोग, या you can write enumerated over here. Write down the pseudocode statement to declare a variable called bestseller of data type book. So we can do that. The keyword to declare is declare. The name of the variable is best seller and the data type should be book. Now moving further forward, write down the pseudocode statement to assign John William to the author of best seller. So बच्चों ये जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, the name of the variable is best seller. The data type is book. This means this variable can store 4 items. Like ये ISBN भी store कर सकता है. We can store author, we can store title, we can store the supplier. So हम ये चारों वैल्यूज क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. So let's define best seller को जॉन, ऑथर असाइन करना है जॉन विलियम्स. So best seller dot author is equal to John Williams. And we are done with the first part. Let's move forward. Question number 2 बच्चों. अब ये बता रहे कि we need to convert, we need to find the binary value of this mantissa and exponent. So without wasting any time, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा. यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, feel free to write on MAK chat. MAK chat पर लिख देगा तो मैं आप लोग को री एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगर कोई डाउट हो रहा है आप लोग को तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा. The first thing that we do, हम exponent यहाँ पे find out करेंगे. The value of exponent is 1, 2, 4, -8. So this is 7.
द डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर, तो मुझे 7 डिजिट्स राइट की तरफ मूव करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7. This means my decimal point will be right over here. So I wrote the value over here 0 0 1 1 1 0 0 0. Decimal point is right over here. अब decimal point के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों दैट इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ जीरो. नाउ अब डेसिमल पॉइंट यहां पर आ गया. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर द सीक्वेंस इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन. एंड डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के ऊपर 1/2 1/4 and 1/8. So just add the values jahan 1 hai. So 32 plus 16 plus 8. So this will become, I think, 56.0. So the result is positive 56.0. Sir, positive क्यों लिख दिया आपने अचानक से यहाँ पे बच्चों? Because of this bit. So ये वाली bit हमें क्या represent करती है? This is a sign bit. ये हमें represent करती है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. We have a question, let me check. Okay, sir, by adding extra bits won't cause an overflow. Actually, we are not adding the extra bits. Aliza, beta यहाँ पे we are not adding the extra bits. हम लोग assume कर रहे हैं कि decimal point के assume कर रहे हैं कि decimal point के right hand side के ऊपर zeros ही होंगे, because we cannot see. हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स खत्म हो गई हैं, so we cannot see, so we are assuming कि जीरो ही होगा. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब बच्चों. अच्छा जी, अब वो बोल रहे स्टेट हाउ यू नो द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. सो बिकॉज ऑफ दीज टू बिट्स. अगर ये दोनों बिट्स सेम है सो नंबर नॉर्मलाइज नहीं होगा. अगर ये दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी, दिस मींस आवर नंबर विल बी नॉर्मलाइज्ड. तो मैंने यहां पे लिख दिया मोस्ट significant 2 bits of Mantissa are same. That's why the number is not normalized. अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों नॉर्मलाइज करो नंबर को. ठीक है, सो नॉर्मलाइज करने के लिए यू कैन सी, देखें आपका डेसिमल पॉइंट इन जनरल यहां पर था. जब आप डेसिमल पॉइंट को यहां पे मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है. एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है. अब आपको नॉर्मलाइज करने के लिए यू नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट राइट ओवर हियर. यहां पे मूव अगर मैं डेसिमल पॉइंट को कर दूं, इफ आई मूव माय डेसिमल पॉइंट राइट ओवर हियर, सो दोनों बिट्स क्या हो जाएंगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स क्या हो जाएंगी? दे विल बिकम अपोजिट 0 1. सो मैं एक डिजिट यहां पे मूव कर रहा हूं, तो मैं एक्सपोनेंट की वैल्यू के अंदर बच्चों क्या करूंगा? -1 करूंगा. ठीक है, सो जीरो डॉट 1 1 1 0 0 0 0 एंड द एक्सपोनेंट पहले 6 था, अब क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 6 0 1 1 0. सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब वो बोल रहे बच्चों राइट डाउन द पैटर्न फॉर द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग अ नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन दिस फॉर्मेट. आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, बट दैट नंबर शुड बी नॉर्मलाइज्ड एज वेल. नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए बच्चों. ठीक है, तो नंबर पॉजिटिव रखना है. मैंने सबसे पहले क्या किया? आई पुट अ 0 ओवर हियर. अब नंबर बड़ा होना चाहिए, सो 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मुझे नंबर को बड़ा करना है, तो एक्सपोनेंट भी क्या रखना है? मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव रखना है. सो 0 1 1 1. सो दिस इज द पैटर्न फॉर
largest positive number and of course normalized. Sir, normalized कैसे हुआ ये? You can see these two bits, most significant two bits are opposite. That's why. ठीक है, ये now normalized number है. Okay, now एग्जामिनर बोल रहा है बच्चों स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, बट दैट नंबर शुड बी नॉर्मलाइज्ड. सो नॉर्मलाइजेशन के लिए 0 आई नीड टू पुट 1 ओवर हियर. अगर ये नॉर्मलाइज नहीं बोलता बच्चों में सारे जीरो लगाता और आखिर में यहां पे बंद करता, लेकिन सिंस उसने बोला है कि नॉर्मलाइज रखना है आपको नंबर, सो यू नीड टू पुट 1 राइट ओवर हियर. और बाकी सारी बिट्स को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया. अब देखो एक्सपोनेंट जो है ना आपके पास, यू नीड टू रिमेंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में. सर टूस कॉम्प्लीमेंट में तो हम क्या रिमेंबर करें बेटा, आपको ये बात याद रखनी है 1 2 4 -8. अब नंबर को मुझे छोटा करना है, सबसे छोटा करना है, तो भाई जाहिर सी बात है मैं एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर. पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो अब आप खुद बता दें, अगर मैं अपने मेंटीसा को 2 की पावर से -8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोटा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द पैटर्न फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर. अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला क्वेश्चन बच्चों रिपीटेडली बार बार आता रहता है. स्टेट द इफेक्ट दैट has on the number that can be represented. The number of bits available for the real number is increased to 7 if the additional 4 bits are used in mantissa. What would be the effect, and if the additional 4 bits are used in exponent, what would be the effect? So अगर mantissa के अंदर bits increase करेंगे, accuracy of the number will be increased. एंड एक्सपोनेंट की बिट्स को अगर आप लोग इंक्रीज करते हैं, सो रेंज ऑफ द नंबर विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है भाई. अब ये बता रहे कि x द वैल्यू ऑफ x इज 0.1, द वैल्यू ऑफ y 0.2, द वैल्यू ऑफ z is 0.3, and when you add all these three, the student was surprised the output was 0.600000001. Explain why this output occurs. तो बच्चों I told you people के actually 0.1 in floating point number is not actually 0.1, it is slightly higher than 0.1. ठीक है. Similarly 0.2 is not actually 0.2, it is slightly higher than 0.2, and same for 0.3. But when you keep on adding these values, after some time you are going to see the significant difference in the values. So this is why the student should be surprised. ठीक है. So मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया 0.1, 0.2, 0.3 cannot be represented accurately in binary. They are slightly higher when we keep on adding after some time we can see
significant difference in the value. This is called rounding of error. So this is actually called rounding of error. ठीक है भाई, अब बेहतरीन आंसर टू द एग्जामिनर मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स. So when we talk about a composite या non-composite data type, सिंपल डेफिनेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा है डेफिनेशन भी आप लोग रिवाइज हो रही है. डेटा टाइप अ नॉन composite data type does not refer any other data type. एग्जाम्पल देने बच्चों, एग्जाम्पल pointers, enumerated. You can also write set. Set भी वैसे नॉन कंपोजिट होता है, लेकिन सम टाइम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेट जो है वो उसके अंदर एडिशन आ जाता है, तो कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पढ़ना, उसको छोड़ दो. ये दो आप लिखो. एंड when we talk about a composite data type, so a data type that refers to any other data type. And you can write, you can give the examples of record, class, and that's it. That's to do the examples देंगे हम लोगों ने यहाँ पे. So this is the difference बच्चों between both of them. तो ये भी आप लोग को एक जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए. Moving forward, okay. सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके पास. ये एग्जामिनर 2 नंबर दे रहा है. अच्छा, 2 नंबर का सवाल है. बोले यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को स्टेट करो. व्हाट इज मेंट बाय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? सो a data type created by developer as per the requirement. Can be derived from one or more existing data types as well.
ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी आर हैविंग डाटा टाइप। ये बता रहा है टाइप, डिक्लेयर, मंथ्स, और आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट जैन, फेब, मार्च एक सीक्वेंस के अंदर दे दिया गया। सो यू कैन सी कि जैन, फेब, मार्च के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, so this is enumerated. Identify this type of user defined data type. So this is enumerated. Write down a pseudocode statement to declare a variable called current month of the data type months. That's easy. Declare current month and the data type will be months. Write down a pseudocode statement to assign a value August to the variable current month. So current month will be equal to August. Yeah, you can also बच्चों select आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, डॉट ऑगस्ट। तो डॉट लगा के भी आप लोग ऐसे लिख सकते थे, बिकॉज जनरली हम लोग एन्यूमरेटेड से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, आप डॉट लगा के उस लिस्ट को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आयशा ने हमें यहाँ पे काफी अच्छी ऊपर डेफिनेशन बताई है कि व्हाई वी कैन यूज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फर्दर सर प्लीज टेल हाउ, अली जैन प्लीज ऐसे सवाल नहीं करो, हाउ इट इज एन्यूमरेटेड। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो टाइप, डिक्लेयर, मंथ्स एंड एन्यूमरेटेड के अंदर क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सो जैन, फेब, मार्च एक कलेक्शन है कॉन्स्टेंट्स का। मोर ओवर ये जैन, फेब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो यहाँ पे नहीं था, तो मैंने फॉरन प्रिडिक्ट कर लिया कि एनएम के ऊपर कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी। So would you prefer the as the ideal approach? I will be going with, अगर मैं पेपर कर रहा होता तो आई विल बी गोइंग विद दिस अप्रोच, मैं ये वाली अप्रोच यूज करता। ऑल्दो आपके पास आई थिंक मार्किंग स्कीम में ऊपर वाला आंसर अवेलेबल है, लेकिन दिस इज द मेथड दैट वी कैन यूज एंड वी आर राइटिंग द सूडो कोड। तो सूडो कोड के अंदर ये चीजें चलती हैं आपके पास। नहीं तमीमा बेटा, वन लाइनर नहीं, स्पेस 2 लाइनें, मतलब आपको 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं एटलीस्ट। अगर एक नंबर का सवाल होता देन इट वाज फाइन, डेटा क्रिएटेड बाय डेवलपर एज पर द रिक्वायरमेंट, देन इट वाज फाइन। लेकिन सिंस एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 2 मार्क्स, तो 2 पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, ठीक हो गया। लाइबा बता रही है कि सर मार्किंग स्कीम में ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन गो विद दैट एज वेल, बट यू कैन गो विद दिस ऑप्शन एज वेल। अच्छा बच्चों आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं होल्ड कर देता हूं जरा, आसान है क्योंकि आखिर में अगर टाइम बचा, एनर्जी हुई, तो हम लोग ये भी कर लेंगे। वैसे रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट फाइल्स का क्वेश्चन आ गया एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। ठीक है भाई, लेट्स सी। अब ये बता रहे कि टेक्स्ट फाइल को आप लोग कैसे रीड कर सकते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट द फाइल organization method. सो यू पीपल रिमेंबर, मैंने आप लोग को बताया था टेक्स्ट फाइल्स के अंदर डाटा हमेशा बॉटम में ऐड किया जाता है एंड
टेक्स्ट फाइल्स को हमेशा लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है. सो टेक्स्ट फाइल्स कैन ओनली बी रीड इन अ serial pattern. The next option is file for recording temperature every hour. हर घंटे बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है. Like in the first hour, the temperature was 22, then 21, then 23, then 22. तो हर डाटा आपका अपेंड किया जा रहा है. तो सीक्वेंस के अंदर डाटा स्टोर किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर आईडी का जिक्र नहीं किया गया. तो अगेन this data can be accessed in a serial pattern. Master file for paying each employee every month. So since it's a master file and we are going to pay, so employee ID is compulsory, so we can go with sequential file organization. इसके अंदर हम लोग रैंडम के साथ भी जा सकते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स द एम्प्लॉय मास्टर फाइल है तो उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी भी अवेलेबल होगी. लेकिन द लास्ट ऑप्शन हमें सजेस्ट कर रहा है कि कस्टमर यूजर नेम एंड पासवर्ड फाइल. सो whenever you enter, आपको सर्चिंग यहाँ पे फास्ट करनी है, आपको तेज सर्चिंग करनी है. So whenever you want to perform the fast execution, you always go with the random organization of the files. Now moving further forward. Okay, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. ये देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा हट के पढ़ाया था आप लोगों को. दैट वाज कॉल्ड रैंडम फाइल्स. और रैंडम फाइल्स के अंदर आई डिस्कस द हैशिंग एल्गोरिथम एज वेल. अब ये हैशिंग एल्गोरिथम आपके पास, ये हैशिंग एल्गोरिथम आपके पास रैंडम ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है. So whenever you are organizing the file in a random pattern, so वहां पे भी आपके पास हैशिंग एल्गोरिथम अपना रोल प्ले करता है. अब जरा रीड करते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर. अच्छा सवाल है. Why can't we access the second option वाली फाइल sequentially? Because कोई की फील्ड के बारे में जिक्र नहीं किया गया अलीजा. That's why if you want to access a file sequentially, so there must be any key field should be available. So temperature record किया जा रहा है, कोई की फील्ड के बारे में डिस्कशन नहीं है. So that's why I cannot go with the sequential या random access for the second option. अगर यहाँ पे बताया जाता कि एक रूम का टेम्परेचर, अपर बहुत सारे रूम्स हैं एंड रूम आईडी के ऊपर हर आर के ऊपर टेम्परेचर स्टोर किया जा रहा है, देन आई कैन गो विद द सीक्वेंशियल, बिकॉज रूम आईडी का जिक्र कर दिया गया. रूम आईडी कैन एक्ट एज अ की फील्ड. ठीक है, दैट्स व्हाई. तो की फील्ड का होना जरूरी है. तो आपको बस ये पिक करना था कि की फील्ड कहां पे आ सकती है, कहां पे नहीं आ सकती. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज हैशिंग एल्गोरिथम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए. अच्छा सवाल है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके, 1 marks. A bank has around unit 10, 100,000, 10,000, 95,000 customers. Each customer has a unique ID. When a customer uses ATM machine to obtain cash, current balance is checked. The balance is stored in a file. The customer ID is 6-digit number in the range 100000 से लेके 999999. An encrypted pin. ठीक है. So we are also having customer ID भी है and we are having encrypted pin भी है and we are having current balance as well. A file can store maximum of 10,000 records. Give a reason why a random organization would be appropriate for this file. We need fast access. The best reason is we need fast access of the data. We need quick access
of data. That's why. ओके अब ये बता रहे एन एल्गोरिथम। अब देखिए बच्चों, ये जो सामने एल्गोरिथम है ना, ये एक हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया गया। अब ये हैश फंक्शन ना आपको पता होगा पेपर में वो क्या अप्लाई करने वाला है, ना मुझे पता होगा। अब ये आपको खुद ही इंटरप्रेट करना है कि हो क्या रहा है। एन एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन दिस फाइल इज यूजेस द फॉलोइंग हैश फंक्शन। रिकॉर्ड की कस्टमर आईडी मॉड 10,000 है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख। सो 1 लाख से कस्टमर आईडी को मॉड अप्लाई किया जा रहा है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए मॉड क्या करता है। मॉड सर हमें पता है, आप नहीं बताए। मॉड हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब वो बोले बच्चों ये हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया गया। सो जब इस आईडी के ऊपर हमने 1 लाख से डिवाइड करा, सो द रिजल्ट वॉज, द रिमाइंडर वॉज 2139। अब अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे द रिमाइंडर विल बी ऑफ कोर्स 4। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे द रिमाइंडर विल बी 899998। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सो द रिमाइंडर विल बी 2139 एंड वी हैव अ कोलिजन, यू कैन सी। बट खैर जो रिजल्ट है, हमें तो अभी रिजल्ट के बारे में बात करनी है। अच्छा जी, वो बोल रहे रिकॉर्ड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? रिमाइंडर 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? सो 1 लाख है, 1 लाख से एक माइनस कर दें, सो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9999 यूनिट 10, 100,000 अनदर 9। so this can be the maximum value 10,000। ठीक है। अब देखिए ये जस्ट आईक्यू लेवल क्वेश्चन है अभी तक। सर can you we have two questions। सर पिन एनक्रिप्ट करनी है तो हैशिंग एल्गोरिथम नहीं लिख सकते? नहीं जाइम, जर्नल क्वेश्चन है ये। उसने बताया भाई एनक्रिप्टेड पिन को पहले कस्टमर आईडी है, एनक्रिप्टेड पिन है, और फिर करंट बैलेंस है। ये 3 रिकॉर्ड फाइल के अंदर स्टोर किया जा रहा है। एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, शायद क्वेश्चन में यूज हो, शायद ना हो। जनरल इंफॉर्मेशन है, नथिंग टू डू विद दिस। तलहा बोल रहे सर थर्ड वाली वर्किंग शो कर दें। मैं इसमें क्या शो करूं तला? चले मैं शो कर देता हूं। 689998 100000 से मैंने इसको डिवाइड करा। सो when I'm going to divide this, the remainder will be 89998। So this will be my remainder। ठीक है। So let's move forward। Okay, ये बोल रहे now we need to write a procedure to insert a new record in the file। एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं इन अ फाइल। प्रोसीजर इंसर्ट रिकॉर्ड कस्टमर आईडी, रिकॉर्ड की कस्टमर आईडी मॉड 1 लाख, सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, फाइंड पोजीशन फॉर द न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट इट, रिपीट इफ रिकॉर्ड एट पोजीशन रिकॉर्ड की इज एम्प्टी। अब हम जिस प्लेस पे अपना रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहे हैं, सो दैट प्लेस शुड बी एम्प्टी, वरना फायदा ही नहीं है। देन इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड एट द पोजीशन रिकॉर्ड की, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। एल्स अगर वो एम्प्टी नहीं है तो बच्चों व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द ओपन हैशिंग, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। इफ रिकॉर्ड की इज इक्वल टू 99999, अगर आपकी रिकॉर्ड की मैक्सिमम इंडेक्स के ऊपर है, सो वी नीड टू मूव, हमें वापस से क्या करना पड़ता है, हमें रैप बैक करना पड़ता है वापस एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। सो रिकॉर्ड की शुड बी इक्वल टू 0।
Yes, these are called comments. Else, record key is equal to record key plus 1. Else record key is equal to record key plus 1. और कब तक चलता रहे? Until success is equal to true and procedure we are done. तो सिंपली बच्चों, मैंने फाइल में चेक करा, एक रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहा था, मैंने इस फाइल में चेक करा, अगर ये यहाँ पे रिकॉर्ड एम्प्टी है तो सिंपली मैंने सक्सेस को ट्रू करवाया और मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे अपना रिकॉर्ड. लेकिन अगर पहले से यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है, देन आई चेक कि कहीं मैं आखिरी पोजीशन पे तो नहीं खड़ा हुआ. अगर मैं 999 पे खड़ा हूं तो आई नीड टू मूव बैक टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल. और अगर ऐसा नहीं है तो बस मैंने यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल है, मैं यहाँ पे डाटा स्टोर करने जा रहा हूं, तो वी नीड टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन सर. हम सर एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें. देखो देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूं. एक रैंडम फाइल है, मैंने पास रिकॉर्ड की वैल्यू आई, मैं यहां पे लेट्स से द रिकॉर्ड की वाज 8, मैं 8 पे रिकॉर्ड स्टोर करने गया, इस लोकेशन के ऊपर मैं अपना रिकॉर्ड स्टोर करने गया. अगर यहाँ पे ये रिकॉर्ड एम्प्टी था, अगर ये रिकॉर्ड यहाँ पे एम्प्टी था, तो मैंने अपना रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, खत्म, दैट्स इट, कहानी खत्म. लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई डाटा अवेलेबल था, ये फ्री स्पेस नहीं थी, तो आई नीड टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस. तो मैंने अब 8 की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की इज इक्वल टू रिकॉर्ड की प्लस 1 कर दिया, मैंने 9 पे स्टोर करवा दिया. अगर 9 पे नहीं होगा 10 पे चला जाऊंगा, 10 पे नहीं होगा 11 पे चला जाऊंगा. ये आगे बढ़ते बढ़ते अगर मैं 99999 पर आ गया, दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग ओवर हियर, तो आई नीड टू मूव बैक. अब मैं फाइल के स्टार्टिंग में जाके डाटा अपने स्टोर करूंगा. तो दैट्स व्हाई मैंने रिकॉर्ड की को क्या करवा दिया, 0 करवा दिया. अगर रिकॉर्ड की वैल्यू 99999 हो जाए, रिकॉर्ड की को 0 कर दो, वरना रिकॉर्ड की सिंपली क्या करो, +1 +1 +1 करके आगे मूव करते रहो. एंड जहां पे भी आपको फ्री स्पेस मिले, जस्ट स्टोर योर डाटा. अब्दुल्ला मुनीब आ गए भाई. सर ये तो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो तो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस. अब्दुल्ला यस, लेकिन सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ना, कि अगर मैं अपना रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहा हूं, वहां पे ऑलरेडी डाटा अवेलेबल था, देन वी आर गोइंग विद द सीरियल फाइल, देन फिर वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस. वरना क्या पता वहां पे जगह खाली हो और मैं एग्जैक्टली पहले अटेम्प्ट के ऊपर ही अपना रिकॉर्ड जो है वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टोर कर दूं. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, explain why an encrypted version of the pin is stored in a file. Encrypted version of the pin is being stored in the file. Because अगर फाइल हैक हो जाए तो no one is able to read the data. That's what we are going to write. यही लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे. If file is being hacked, so encrypted pin hacker won't be able to understand encrypted pin. ठीक है, एंड डाटा या फाइल can be transmitted safely. A customer attempts to withdraw cash from an ATM
an algorithm is used to check if the customer has entered the correct pin. ठीक है, customer ID is read from the card. Customer enters pin. Customer pin is encrypted, of course. कस्टमर की पिन जो है वो एनक्रिप्टेड है. कस्टमर आईडी इसके बाद जो है बच्चों क्या किया जाएगा, हैशिंग एल्गोरिथम विल बी अप्लाइड ऑन द कस्टमर आईडी ताकि एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाए हमें. हैशिंग एल्गोरिथम, उसने इतना इतना लिखा था, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं भाई, चले खैर. हैशिंग एल्गोरिथम विल बी अप्लाइड ऑन कस्टमर आईडी. Customer record is located in file. If match, then transaction can proceed. Pin is compared with pin in record file. और अगर मैच करेंगी पिन तो then transaction can be proceed. थोड़ी लंबी हो जाएगी अलीशा बेटा ये जो आपने अभी यहाँ पे लिखा है, बट यू कैन मतलब सिंपल रखें चीजों को थोड़ा, इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा ये, ठीक है. अच्छा जी बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे. तो ये एक हैशिंग एल्गोरिथम का भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा. ओके, अगेन रियल नंबर्स का एक क्वेश्चन आया हमारे पास, एंड अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा बच्चों क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ पे, बिकॉज आप लोग भी अब प्रो हो चुके हैं ये क्वेश्चन कर करके. द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट, दैट इज 2. आफ्टर दिस वर्किंग शो करनी है. डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर, दिस मींस डेसिमल पॉइंट विल बी राइट ओवर हियर, सो दिस विल बिकम 0 1 0 decimal point 1 0 0 1 0 and 1 2 4 and so on, 1 over 2 1 over 4 1 over 8 and 1 over 16. so जहां जहां 1 है हमें वो वैल्यूज काउंट करनी है. so 1 over 2 plus 1 over 16, this will become 16, 9 over 16, and over here we are having the value of 2. Number is positive, so positive 2 19 over 16. So that's the right answer that we have. Calculate the normalized binary number for minus 3.75. How many bits for Mantissa do we have? Let me check. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 3 ka binary will be 11.75 multiplied by 2. It will become 7575 1.5. मैंने यहाँ पे 1 नोट करा, 0.5 again multiply by 2, that will be 1.0. मैंने again whole part note करा, that is 1. So this is the pattern that we have. 1 1 decimal point right over here, 1 1. I move this decimal point right over here, so the pattern becomes 0.1111 and the total number of bits for Mantissa. अच्छा, 2 digits move किया मैंने यहाँ पे decimal point को, exponent will become 2 0 1 0 0 and the total number of bits for Mantissa were 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So this will be my Mantissa for positive 3.75.
but I need to calculate minus 3.75. So minus 3.75 calculate करने के लिए what we do, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की नहीं, ज़हीम, नो नीड टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, ऐसे ही लिख दो, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ सिंस द वी नीड टू कैलकुलेट नेगेटिव 3.75, सो जस्ट टेक, सिर्फ मैंटीसा का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो तो माइनस 3.5 बन जाएगा। तो इट्स एन इजी टास्क, 1 1 1 0 0 0 0 1, this is called first complement, and first complement के अंदर अगर मैं +1 कर दूं, this will become 2's complement. So 1 + 1 2, 0 here 1 carry, 1 + 1 2, 0 here 1 carry, 1 + 1 2, 0 here 1 carry, 1 + 0 1, 0 0 0 1. So this is our mantissa. 1 0 0 0 1 0 0 0. So this is the binary for minus 3.75. Okay जी, वही पुराना सवाल, the number of bits available to represent the real number is increased to 16. State the effect of increasing the size of exponent by 4 bits. Range of number will be increased. ठीक है भाई। अच्छा जी, state why some binary representation can lead to rounding errors. सो बड़ा सिंपल सा जवाब है बच्चों, राउंडिंग ऑफ एरर्स क्यों होते हैं, बिकॉज बाइनरी के अंदर हम लोग नंबर्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं होता हमारे पास, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द बिट्स, you need more bits for the accurate representation, that's why. So it can lead to rounding of errors because we cannot represent some numbers accurately we need more number of bits. Complete the following description by inserting two terms. Dash can occur in exponent of the floating point number when the exponent has become too large to be represented. बहुत बड़ा हो गया exponent, overflow हो जाता है बच्चों. A calculation results in a number so small. जब नंबर बहुत छोटा होता है तो क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड अंडर फ्लो कहलाता है ये आपके पास, ठीक है भाई। ओवरफ्लो और अंडर फ्लो का फिनोमेना भी अकर हो जाता है। ओके एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज अगेन मैंटीसन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। मैं भी ये वाला भी क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन पहले यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई। डिस्क्राइब
Okay, describe the purpose of user defined data type. So we have multiple purposes to create a new data type, to create data type as per our requirement allow flexibility in programming. I think that's more than fine for 2 marks. Uh, Define using pseudocode the following enumerated data type. School day to hold data about the days students are usually in school. So we need to define this data type. You can define this type is the keyword. The name of the data type is school. And the values that students are usually in school: Monday, Tuesday, sequence is important, Wednesday, Thursday, Friday. आप लोग तो सैटरडे को भी वैसे होते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन दैट. ठीक है, फ्राइडे तक. एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं बनाते, नेवर क्रिएट. अनस वो टॉपिकल पास पेपर्स का इंडेक्स नहीं बनाया. मैं कोशिश करता हूं कि मैं कहीं कुछ करूं. अब आई हैव टाइम, मैं एक बना के अलग से शेयर कर दूंगा, नया बना दूंगा 2021 के पेपर्स ऐड करके, एक नया बना के वो मैं शेयर करूंगा. बिकॉज नाउ वी आर हैविंग टाइम, तो आई विल रिक्वेस्ट माय टीए टू डू दैट. एंड टाइप ना नहीं लिखते, नहीं अलीजा बेटा, इसके अंदर एंड टाइप नहीं लिखते. रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर एंड टाइप लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते. ठीक है, ओके फाइन. वीकेंड टू होल्ड data about the days students are not in school. तो एक संडे ही होगा शायद. टाइप वीकेंड, सैटरडे एंड संडे. ठीक है भाई, 1 marks, वी आर डन. Define using the pseudocode a composite data type club meet. This will hold the data about the club members: first name, last name, 2 days they attend, one school day and one not in school. 4 marks. Enumerate data by. Now you need to create. अब एंड टाइप करेंगे अलीजा बेटा, आप जो पूछ रही थी सवाल. तो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप. सो टाइप club meet. The first variable will be first name. So declare first name, it will be string. Declare last name, string. Declare one school day. The name of the data type is school day. So 2 days they attend. वेरिएबल का नाम क्या रखें, क्या रखें? डे स्कूल कर देते हैं. डे स्कूल एंड द डे टाइप विल बी स्कूल डे. Declare not
ऑन अ स्कूल डे, सो ऑन डे और ऑफ डे कर देते, अच्छा रहता। खैर चलें, ऑफ डे स्कूल and the day type will be weekend, and we are done. And type, so examiner is awarding us 4 marks for this. अच्छा, दाऊद बोले सर स्कूल डे ही रख दे। नहीं भाई, जब डेटा टाइप की डेटा टाइप है आपके, सॉरी डेटा टाइप स्कूल डे, तो वेरिएबल का नाम स्कूल डे नहीं करेगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर डेटा टाइप आपकी स्कूल डे, सो वेरिएबल का नाम स्कूल डे नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंट रखा करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, -7.5 कर सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर है यहाँ पे कन्वर्जन के लिए। और ये वाला सवाल देखते हैं, और ऊपर वाला सवाल अगर देखूं मैं जरा, चलिए सारे कर लेते हैं। ठीक है, सो बच्चों दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑफ अगेन मेंटी से एक्सपोनेंट। जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फील फ्री टू आस्क। तो लेट्स सी, numbers are stored in a computer, 12 bits for mantissa, 4 bits for exponent, and you need to normalize this number. ओके जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पे नॉर्मलाइज करना है मुझे इस नंबर को। सो आई जस्ट नीड टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट राइट ओवर हियर। डेसिमल पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं? आई नीड टू काउंट दैट, 1 2 3 4 5 6 7। so exponent will become 7, 1 1 1 0, and the mantissa will become 0, decimal point is right over here। और बाकी मैं पूरा नंबर क्या करूंगा, ये वाला प्लेस कर दूंगा। सो 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0। I'm not able to store बच्चों लास्ट 2 बिट्स, मैं स्टोर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेंटिसा की बिट्स खत्म हो गई हैं। स्टेट the consequence of storing the binary number in part A1 as a floating point number, justify your answer। so 2 बिट्स मिस हो रही हैं, कॉन्सिक्वेंस बच्चों क्या होंगे आपके पास? मेंटिसा की बिट्स कम हो रही हैं, सो एक्यूरेसी ऑफ द नंबर विल बी रिड्यूस्ड। एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी नंबर की, एंड द जस्टिफिकेशन इज बिकॉज टू represent the number accurately, we at least need 2 बिट्स मिस हो गई थी, 12 बिट्स हैं। we at least need 14 bits of mantissa।
Explain the reason why binary numbers are stored in normalized form. There are multiple reasons. Store maximum range of numbers to increase accuracy of a number to avoid multiple representation of number to minimize leading zero error. And this, let's solve this question as well, बच्चों. एक आखिरी सवाल है, ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं. -7.25. Let's convert this. The binary for 7 is 111.25 multiply by 2. The result will be 0.5. 0 नोट कर लिया. 0.5 multiply by 2 1.0. 1 नोट कर लिया. इस सीक्वेंस के अंदर पैटर्न चलता है. So the number will become 111.01. I move this decimal point right over here. This will become 0.11101. 3 digits move किया तो exponent will become 110000. Exponent will become 3. And now the total bits for Mantissa were 10. So this means 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 बिट होगी Mantissa की. 2's complement ले लें, माइनस हो जाएगा नंबर. So 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1. This is the first complement. Numbers को opposite कर दिया मैंने. And now just add +1 in the number. 1 + 1 0 1 carry. 1 + 1 0 1 carry 0 1 carry 0 1 carry 1 1 0 0 0 1. So this is the representation for -7.25. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0. We are done. Okay, we have a question. Let me check that. नहीं, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा. प्रीवियस क्वेश्चन के तो बात नहीं कर रहे आप लोग. हाँ, यू कैन राइट. यहाँ पे जस्टिफिकेशन के अंदर यू कैन राइट ओवरफ्लो एज वेल. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड exponent is 7 1 2 4. So exponent is 7. Decimal point is right over here. इसका मतलब decimal point कहां पर होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7. So decimal point should be right over here. Now 1 0 1 1 0 0 0 1. Decimal point 1 1. Ab you people know the pattern. 1 2 4 8 16 32
64 and minus 128 because the number is in 2's complement. That's why. And over here 1 over 2 and 1 over 4. So minus 128 plus 32 plus 16 plus 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4. अब ये रिजल्ट आप लोग कैलकुलेट कर लें. Okay, we have an answer. Minus 78.25. आप इसको जब एडअप करेंगे तो बच्चों यही आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा. अनदर मेथड इज कि आप पहले मेंटीसा का क्या करें, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, फिर आप कैलकुलेट कर लें, आंसर जो आएगा आखिर में उसका नेगेटिव साइन लगा दें. तो दीज आर द मेथड. ये दो मेथड है आपके पास नेगेटिव नंबर्स का एक्सपोनेंट निकालने के लिए. ओके, नाउ नॉर्मलाइज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सबसे पहले एक्सपोनेंट की वैल्यू बच्चों निकालो. क्या है? 1 2 4 8 16 minus 32. So exponent is minus 32 plus 4 plus 2 plus 1. So plus 7 कर दिया तो it will become minus 25. तो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है. नाउ वी नीड टू नॉर्मलाइज. काफी बड़ी नॉर्मलाइजेशन है. डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर. अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहां लेकर आ जाऊं देन माय नंबर विल बिकम नॉर्मलाइज्ड. कितने डिजिट्स मूव किया मैंने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. अब बच्चों अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करता हूं तो मेरा एक्सपोनेंट क्या होता है? माय एक्सपोनेंट इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस होगा, माइनस होगा. और अगर मेरा एक्सपोनेंट डेसिमल पॉइंट इस तरफ जाता है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो इस केस में राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो रिड्यूस होगा, तो मतलब -6. तो -6 -25 एक्सपोनेंट विल बिकम -31. तो -31 की वैल्यू लिख दें. तो दिस इज द वैल्यू फॉर -31. और नंबर बच्चों अब नॉर्मलाइज करके लिख दें 0.111. तो डेसिमल पॉइंट यहां पर आ गया. रिमेनिंग बिट्स आप लोग को पता है इट विल बिकम 00000 and we are done. The number is being normalized. Yes, Laiba, it will be -31. Laiba ने हमें आंसर बताया. यहाँ पे वर्किंग तो मैंने की नहीं भाई, शो कर देगा यहाँ पे. जो ऊपर मैंने काम किया नीचे कर लेगा. Now last two parts. The dynamic number 513 cannot be stored accurately as a normalized floating point number in the computer system because बच्चों number of bits are less. आपको एटलीस्ट अभी मेंटीसा की बिट्स कितनी है भाई हमारे पास? वी आर हैविंग 10 बिट्स फॉर मेंटीसा. सो टू रिप्रेजेंट दिस वी एटलीस्ट नीड 12 बिट्स. या 11 बिट्स लगेंगी हमारे पास. नंबर ऑफ बिट्स for Mentisa are less. We need at least 11 bits to represent 513 accurately. एंड यू कैन टॉक अबाउट ओवरफ्लो की बात कर लेगा थोड़ी कि ओवरफ्लो हो जाएगा एंड XYZ.
Describe an alteration in the floating point number that will enable this number to be stored using the same total number of bits. इसकी बिट्स को एक्सपोनेंट को 5 कर दें, इसको 11 कर दें, हो जाएगा. Exponent bits should be 5. Mantissa bits should be increased to 11. अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देगा, सो आपका नंबर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो जाएगा. सो दैट्स इट बच्चों. एक सवाल था वो आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेगा, मैंने पहले कभी क्लास में करवाया होगा ऑफ कोर्स. सो आज हम लोग अपना सेशन यहाँ पे एंड करेंगे. इसी तरह हम लोग आगे मूव करते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक. आज हमने 3 टॉपिक कवर अप करें. वन वाज फाइल्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड द लास्ट वन वाज रियल नंबर्स. सो इन आवर नेक्स्ट सेशन हम लोग इसी तरह और टॉपिक्स के मल्टीपल पास पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे. एंड इफ आई वुड लाइक, अगर मैं फील करूंगा कि कोई इस तरह का कोई नया क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है आप लोग को, so we are also going to perform that particular question as well. तो आज ये तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ. ओह ओके, पेज 7 लास्ट पार्ट सी समझा दें. पेज 7 वही वाली रीजन है कि नंबर ऑफ बिट्स क्या है आपके पास यहाँ पे लेस है. सेम रीजन है लाइबा यहाँ पे भी कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर मेंटिसा आर लेस, या एक्सपोनेंट की बिट्स आपके पास आगे पीछे होंगी, तो वो आप खुद चेक कर लेगा. जब इस नंबर को कन्वर्ट करेंगी आप, तो यू कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कम मिलेंगी और आपका नंबर ओवरफ्लो की तरफ जा रहा होगा. तो दैट्स द रीजन दैट यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर. सेम रीजन होगा दैट वी डिस्कस. ठीक है, चलें. थैंक यू. चलें, थैंक यू सो मच. यस, इसी तरह सेशन हम लोग आगे कंटिन्यू टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.